Hello students, today we will be studying chapter 2 of business studies, that is forms of business organization. And let's start with the introduction part. So, अगर आप बिजनेस स्टार्ट करने का प्लान कर रहे हैं इन फ्यूचर या आपके पास ऑलरेडी कोई बिजनेस है और उसको आप एक्सपैंड करना चाहते हैं योर एग्जिस्टिंग बिजनेस उसको अगर आप उस बिजनेस को और एक्सपैंड करना चाहते हैं बड़ा करना चाहते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट डिसीजन जो होता है आपको उस वक्त लेना है दैट इज़ द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कि आप जब बिजनेस शुरू करेंगे या आप ऑलरेडी कर चुके हैं तो कौन सा फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपके बिजनेस के लिए अकॉर्डिंग टू यू बेस्ट रहेगा. तो फॉर दैट वी नीड टू डिसाइड and figure it out the advantages and the disadvantages of that form of business. So there are various forms of business organizations, but it's very important to choose the right one. Then only you can run your business for the longer period and gain profit. So let's start with the first one, that is sole proprietorship. What does the word sole proprietorship means? Here the word sole means only and proprietor means the owner. So in simple words we can say sole proprietorship means the only owner of the business. So let's take a example. Every day or some or the other day आप अपने नियर बाई स्टेशनरी शॉप में जाते हैं टू परचेज बुक्स, पेन्स, चार्ट पेपर्स, cover papers, registers, etc. from your neighborhood stationery store. So obviously you interact with that person, right? You ask them what you want to buy and they provide you that object and you pay them in return. So जिस इंसान से आप वो ऑब्जेक्ट खरीद रहे हैं, जिनके पास जाके वो ऑब्जेक्ट ले रहे हैं, स्टेशनरी का हो या कोई भी अदर ऑब्जेक्ट्स हो, तो that person is known as the sole proprietor because he or she is the one who owns that shop and is running the business and controlling the business. उनके सिवा कोई उनका उसमें पार्टनर नहीं है बिकॉज सोल प्रोप्राइटर का मतलब ही है ओनली ओनर, सिंगल ओनर. दैट इज सारा कंट्रोल, मैनेजमेंट, ओनरशिप उन्हीं के अंडर है, सिंगल ओनर के अंडर है. ओके, नेक्स्ट पार्ट कम्स कि उसमें जो प्रॉफिट होगा या जो लॉसेस वो बेयर करेंगे वो कौन करेगा. तो ऑब्वियसली if the owner is only one, he has to bear all the losses and he will be the recipient of all the profits also. तो जितने रिस्क वाले काम हैं, रिस्क होंगे मीन्स वो उन्हीं के ऊपर है और प्रॉफिट भी होगा तो उन्हीं के ऊपर है. तो दिस फॉर्म ऑफ बिजनेस इज particularly common in personalized services. Example, we can take beauty parlors, hair salons, and small scale activities like running a retail shop in a locality. I hope the sole proprietorship form of business organization is clear to you all. The next is joint Hindu family business, and that we will be doing in the next video. And before that we'll study the features of the sole proprietorship. Hope you understood and the topic is clear. We'll also be studying the limitation of sole proprietorship. So in the second video we'll study the limitations and features of sole proprietorship. Thank you.